Hello and welcome to another episode of Bitcoin Weekly. Today, we have a couple of interesting news about Bitcoin and related information as usual, and we'll be covering them. But the main topic of discussion is about real estate and how it is losing its value compared to Bitcoin in the long run. And yeah, joining us is Bhavik as always. कैसे हो भाविक? How are you? I'm good. How are you, Niall? मैं ठीक हूँ. आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है थोड़ी. बता रहे थे. Mild cold, mild fever, but now I'm Yeah, recovering. yeah. I hope you get well Mm. soon. Yeah, चलिए, yes. so I won't take much of your time as well, and we'll start off with Mm. the show. एक minute. Yep. So the to start off with, last 2 हफ्ते तक 1 rupee got you 17 sats. Now 1 rupee gets you 16 sats. So Hmm. yeah, this is our regular thing that we start with every episode. And आज का Hmm. current price है $69,305. काफ़ी दिनों से देयर हैज़ बीन अ रेंज, पहले 2-3 दिन पहले इट वाज़ 71 तक पहुँच गया था एंड देन अगेन इट ड्रॉप्ड. So it has been in the 68 to 71 range for a while now Hmm. for multiple reasons. But having said that, the last 19 days have seen continuous inflows in the US spot Bitcoin ETFs. So that's a bullish sign. But equivalent shorting bhi ho rahi hai uh, Hmm. in derivatives market. So Hmm. again, people are trying to suppress the price as much as possible, but only time will tell how much it will move in the other direction. Hmm. So yeah, coming to the main topic for today, it's real estate is crashing against Bitcoin, and Bitcoiners have been predicting this and telling this all along. Okay, real estate should be utilized for Hmm. its utility value and not as a store of value. But what has happened over the years is because real estate is comparatively scarcer asset, ऐसा नहीं है कि you can make more Hmm. land unless you are living in Mumbai Hmm. or Dubai, where they have reclaimed sea to make more land units. So unless you're living in Hmm. those Hmm. places or towards the coastal region, which again is a major risk, because if you have your natural calamities, tsunamis and Hmm. excess cyclones, वगैरह सब, there is a risk of that land getting washed. Yeah, people over there need to flee. All of that can happen. So Hmm. having set aside those things, people have started to realize that real estate is fine, it's safe. You need a shelter on your head, I mean a roof on your head. You need a place to live, Hmm. but apart from that it does not serve any utility as such, I mean any purpose as Right. such. Investment ke तौर पे definitely not. Of course, there has been a Hmm. price appreciation in the last weeks, but that is because of the monetary expansion also. Hmm. If you have Hmm. endless money coming into the market, you will put it into scarce assets. And gold is scarce, real estate is scarce, and Bitcoin is scarcer than both as Hmm. of till 20th this year. So इसका मेन चीज ये है कि there is this one guy, a real estate agent, a real estate developer in somewhere in US, I'm not sure. He has a, इसका खुद का community है, 46,000 member Hmm. community, where in Hmm. a Facebook group where Hmm. he obviously tells and recommends places where to buy, where to sell real estate, etc., to his members. Now what this member, his name is, not sure what his name is, Batani, हाँ, Jawad Dashti. So Hmm. he has found out about Bitcoin. I don't know when he found out, but it is very clear that he has put his reputation and career at stake. And he has found out that over the years, real estate is losing its value if denominated in Bitcoin terms. आपके Hmm. fiat terms में, like your INR and your dollar, it will keep increasing, no doubt about that. Hmm. And people will make profits and gains and etc etc etc, वो ठीक है. But if you're comparing it to Bitcoin, the value of a real estate Right. plummets. अब उसने ये बताया है, सो बालाजी हैज रीट्वीटेड हिम एंड बोलते हैं कि real estate only goes up in price because of debasement of dollar. Hmm. So this is a major revelation, because ऐसे छोटे छोटे real estate groups अगर जानने लगे
And if they are also recommending to allocate at least 0.5 or 1% mm, portfolio of theirs into Bitcoin, it will cause a major shift in markets. Now, mm, that is what was expected and predicted by Bitcoiners mm, also. Okay, all the mm, money which is there in your gold and real estate, it will flow into Bitcoin gradually over the course of years, mm, not immediately, of course. एंड ये कस्टडी का प्रॉब्लम हो जाता है बिटकॉइन की कस्टडी का हाउ डू वी डू इट बहुत सारे लोग आर नॉट न्यू टू दिस एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस दैट इज mm, व्हाई mm, this is something which needs to be addressed at mm, once because ये सिर्फ this is a one very small part like this is only a 46,000 member group real estate का बट उसको एक्सपैंड होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी एंड mm, सिंस दिस इज डन इट इज एंडोर्स्ड बाय बालाजी ही हैज रीट्वीटेड इट mm. ऐसे बहुत Sorry. एंड बालाजी को बहुत लोग फॉलो भी करते हैं Mm, एंड उसके चलते देयर विल बी रिपल इफेक्ट्स ऑल अदर स्मॉल रियल एस्टेट डेवलपर्स विल latch on to this idea now having mm, said that I have made a small excel chart अभी इंडिया में ऑन एन इंडिया का नहीं पता आई एम लाइक स्पेसिफिक टू कर्नाटका एंड बैंगलोर average mm, median apartments cost anywhere around 1 to 1.5 crores. So mm, अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखोगे फर्स्ट जैन 2023 को ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का घर it would have costed you 10.92 bitcoin and mm, if fast forward to 9th June 2024 it costs you 2.59 bitcoin. mm, Now, as per predictions, as per your standard, all the big banks जो भी predict कर रहे हैं, if the price crosses 100K, if it crosses 400K dollars for mm, Bitcoin, imagine what will happen to the price in Bitcoin terms. So mm, this is what I wanted to mm, showcase specifically for the real estate markets and the people who deal in real estates. Okay, great. I mean, sure, there are multiple properties that you can sell at premium, telling mm, all your basic amenities, बहुत अच्छा है and all that jazz. But at the end of it, it's a roof on your head. Sure, mm, again, it can be argued कि नहीं ऐसे जीने में क्या रखा है, we can live lavishly and all that, but that's to each their own. Like they have their own specific arguments regarding that. mm, भाविक आप इसका do you have mm. anything to say on this? हाँ, हाँ। सो यस, कमिंग टू दिस फोटो, अगर कोई ये देख के ऐसा लग रहा है उनको कि ये तो सिर्फ 2023 से ही कन्वर्ट कर रखा है, तो Yeah. वो आप 2022, 21, 2020, 2015 तक भी देख सकते हो। अगर वो देखोगे तो फिर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। हमने तो सिर्फ एक Yes, डेढ़ साल का ही absolutely. लिया है ना। सो ऐसा नहीं है कि Correct. बस एक साल में मतलब ये स्मॉल विंडो है, लेकिन अगर लार्ज विंडो हाँ, देखोगे तो अगर दो 2024 चल रहा है, 2015 में देखो तो एक वन बिटकॉइन वाज अराउंड $500, लेट्स से, या $200। सो yeah, एट दैट टाइम you needed 10,000 bitcoin, or maybe 1,000, more than 1,000 bitcoin correct, to buy a house in Bangalore. So now you only need 2-3 Bitcoin. correct. एंड तो एक तो ये चीज। एंड कल अदर दूसरी बात, कल मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी इधर लोकल मेरे सिटी में। सो हाँ, लाइक ही वाज डूइंग फार्मेसी, एंड हम्म, उसका ये था कि लाइक ही इज ओनली 22 years old, और वो बोल रहा है कि भैया बहुत पैसे कमाने हैं मुझे, मैं अभी जैसे हम्म, मेरा फार्मेसी खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं रियल एस्टेट का इधर मैं सिटी में डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट बाई करूंगा, सब हम्म, लोन में जगह चढ़ा दूंगा, हम्म, और कैश फ्लो आता रहेगा। फिर उसको मैंने हम्म, सारा बिटकॉइन बताया। वो बोला कि ये हम्म, तो गवर्नमेंट बोलता है इलीगल है, लीगल। में बोला नहीं, फिर सारा बताया, काफी बात हुई। फिर उसको मैंने हम्म, यही सेम अपना वाला जो आर्टिकल था टीएफटीसी का वो भेजा। सो nice. लाइक उसके तो होश उड़ गए, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार उसको, वो 10 साल से प्लान कर रहा था रियल एस्टेट Yeah, में अपना बिजनेस करने का और पूरा करियर बनाने का, और yeah, ये हो कि उसको बोला कि आपने भैया अब समझ नहीं आ रहा मुझे अब क्या करूं। मैं बोला कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। हाँ, रियल एस्टेट में बोला कि वो कोई स्टोरिंग मशीन थोड़ी होना होना चाहिए। exactly, मतलब अगर रियल exactly, एस्टेट में तुम अपना मनी टाइम स्टोर कर रहे हो, तो वो तो तुमने एक प्रॉब्लम हार्ड बना दिया, आम आदमी तो घर खरीद नहीं सकता, और टफ कर दिया तुमने। तो ये तो रियल एस्टेट में तुम एज ए मनी स्टोर कर रहे हो तो इट्स नॉट गुड थिंग, पर अपने पास ऑप्शन नहीं था। नाउ वी वेरी वेरी फार बेटर ऑप्शन। तो right, लाइक लुक इनटू बिटकॉइन, और लाइक, और ऐसा नहीं कि ये जा सकता है, ये जाएगा। मतलब हमें तो जितना स्टडी करते, जितना एक्सपीरियंस, इतने ऐसे लगता है कि या इट इज
लाइक मेजोरिटी ऑफ द वैल्यू विल मूव टू बिटकॉइन। ऐसा नहीं कि लोग रियल एस्टेट बेच देंगे और बिटकॉइन मारेंगे, लोगों को नहीं नहीं, रहना ऑफ भी है कोर्स तो नॉट। एक नहीं, ऐसे कुछ नहीं वैल्यू होगा ना कि रखेगा। करेक्ट। एक जितना अपने घर पे रहना है उसके लिए रखेंगे, ऐसे नहीं कि दो तीन खरीद हम्म लिए इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए दे दिया। हाँ। तो दैट इज नॉट राइट, बिकॉज आप दूसरों का जो हम्म खरीदना चाहते हैं एक्चुअल अपना घर रहने के लिए हम्म वो नहीं खरीद पा रहे, बिकॉज बिकॉज राइट। ऑफ योर ग्रीड। एंड दैट आई एम नॉट हम्म ब्लेमिंग द ह्यूमन साइकी ओवर हियर, दैट ग्रीड इज कमिंग बिकॉज ऑफ द फिएट मॉनेटरी सिस्टम। राइट, सबको मनी तो बचानी है अपनी, हाँ, डिवैल्यू हो रही है। या और लोग, बैंक्स भी तो लोन दे, बैंक्स भी तो इतना इंसेंटिवाइज कर रही है ना लोन देने के लिए। बैंक्स करेक्ट। कितना चीप रेट पे दे रही है अभी। आज बैंक्स दे रही है, लेकिन आई थिंक बिटकॉइनर्स जो है वो मेरे ख्याल से होम लोन नहीं लेंगे। सो ना, लाइक दे हैव सी आई लॉस्ट द मीन इफ यू हैव कस्टमर्स ऑलरेडी वो, अरे ना। बहुत सारे ऐसे सर्विसेज आ गए हैं ना वेर यू कैन कीप, आई मीन इंडिया में नहीं है ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ, हम्म। as of now. So there are a couple of services in US where you can keep Bitcoin as a collateral, हम्म and उसको like multi sig custody में रख सकते हो, and you can borrow fiat terms or dollars against it. So there are a lot of options where it is as good as gold. आप सोना रखो and उस हम्म पे you can get gold. I mean fiat हम्म terms. So those services will come up. And अभी तो obviously हम्म interest rate बहुत ज़्यादा है for it हम्म because risky asset है Bitcoin. But हम्म over the course of years it will reduce as well. एक राइट। मिनट, सो दो और एक एक चीज हमारे डियर फ्रेंड सचिन ने पूछी है ऑफ लेट, एंड ये बहुत मुझे भी बहुत अच्छी लगी बिकॉज हम दोनों ने डिस्कस किया था, बट ऑब्वियसली ये पूरे क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम की है। सो देर आर टू पीपल कॉल्ड अजय एंड अमित जिनका यूट्यूब चैनल है एवरीथिंग इज एवरीथिंग के नाम से, एंड इट्स अ वेरी गुड चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वॉच द चैनल बिकॉज दे हैव ग्रेट थरो वेल रिसर्च कंटेंट ओवर देयर। तो सचिन ने ये पूछा कि इंडिया सीम्स लाइक इट हैज गॉन फ्रॉम ब्रिटिश राज टिल 1947 to the license and permit Raj till 1991 and now the Fiat Raj. By Fiat Raj, I mean the fiat monetary system that comprises central banking, legal tender laws, incessant public debt creation, exorbitant public expenditure, erosion of financial privacy, perpetual inflation, ever increasing taxation, and above all, government control of monetary policy and monopoly on the regulation of base money supply. कंटिन्यूइंग टू दैट, हायक जो इकोनॉमी इकोनॉमिस्ट थे पहले, एंड आई थिंक इज पास्ट अवे, तो यस। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि देर विल नेवर बी अ गुड मनी अगेन टिल वी टेक इट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट इन by introducing something in a sly roundabout way that they cannot stop. So he's attached the YouTube clip also. Do check it out. And if you cannot find, राइट। let us know. We'll share the clip with you. So Sachin considers Bitcoin, Sachin and Bitcoiners in general consider it's Bitcoin and not crypto to be this something. Can you guys opine on Bitcoin, setting completely aside the notion that it is an asset or an investment, but as something that can potentially enable true free market capitalism and liberty that classical liberals like Mises, Hayek, and Rajaji and other Swatantra Party members envisioned, and bring an end to the fiat Raj in India? So this was the question framed by Sachin. And obviously because बहुत सारे questions थे, they couldn't answer it thoroughly. इसका उन्होंने एक, they did a very condensed form, and I'll play that video here so that you can have a look at it. Sachin says, Ajay, can Bitcoin or other cryptocurrencies do something fundamental for increasing freedom in India? Okay, so I think that there is a great damage that was done to freedom in India by the exchange controls that were put up by the British during Second World War and exacerbated in the following period. So the people responded by coming up with many ways through which uh, the people are able to break past these restrictions. One of them is misinvoicing on trade. So when you send goods out worth 100, they are invoiced as 90 and 10 rupees goes into a foreign bank account. Okay, and the reverse of that on the incoming side. I have a co-authored paper on this, and there are very large numbers going on through which the Indian business community has been able to bypass these exchange control restrictions and achieve de facto
convertibility. So I think that cryptocurrencies becomes one more vehicle for doing that. So I think of it as one more tool, not something fundamental. Um, Vaishnav Vyas. That's it. Right. तो उन्होंने हम्म या उन्होंने बस एक बहुत स्मॉल पोर्शन कवर किया है with all due हम्म respect to whatever he's spoken of. And I genuinely believe he understands Austrian economics and where Bitcoin stemmed from, where the idea came from. And ये हायक को भी पढ़ चुके हैं. And I think I've also asked a question to him in one of his videos, comments में. कौन सा वीडियो था? In India needs decentralization. इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने राइट. उसमें मैंने उनको बिटकॉइन के बारे में पूछा भी था कि कभी whenever if Bitcoin will be accepted as a currency in India ever. तो उसका जवाब भी it was not like in depth उन्होंने जैसे analysis करके बोलते हैं वैसा किया नहीं है. But obviously there is a much room, at least they are open to discussion and open to the idea of something like this. And we are not talking about crypto and other nonsense. We are only focused talking about Bitcoin. So agar if they have any if they would like to get into more in-depth discussions about this, we have a whole list of people who are interested and who are reading day in day out about economics and how Bitcoin fits into this. So yeah, we could have proper discussions around it. ये तो ऊपरी ऊपरी आंसर था. Like Right. ठीक है, this is one of the aspects it covers which everybody knows, Right. and which the government Like has black been. money part, right? Like हाँ, black money part. So like it's a so very small tiny thing of Bitcoin. Like correct, Bitcoin correct. is huge, We're not, huge. yeah, we're not denying कि नहीं होता. I mean, obviously, Right. I'm sure a lot of people do this, and that's not right Mm. also. But at the Mm-hmm. same time, there are numerous other possibilities of Bitcoin which have not been addressed in this particular question. So yeah, Right. time के साथ देखते हैं. Like, can we cover it like in just 3-4 sentence in a minute? Uh, See again now, to come back to what. Wait, I'll give you my opinion. यहाँ पे हाँ, तो सचिन ने पूछा भी था इतना लोडेड क्वेश्चन. इट वाज इम्पॉसिबल टू Right. कवर दिस विद इन 1 मिनट 2 Right. मिनट्स. सो Mm-hmm. यहाँ पे से ये लाइक इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक योर लीगल टेंडर लॉस, डेट क्रिएशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल प्राइवेसी का इरोजन, Mm-hmm. इन्फ्लेशन. ये सारी चीजें in themselves are solution in multiple ways. So we could go in again, probably we could call Mm-hmm. Sachin on the show and ek cheez pe we can have an in-depth discussion later. Right. But yeah, I mean your 2 cents on this, because मुझे तो I can explain each of these things, but बहुत time लग जाएगा इसमें. Right, right. But if any Bitcoiners are listening, so Yes, like we can say the self custody part, correct. the censorship resistant part, the Yes, inability of governments to inflate the money supply, inability of government to seize the money. yeah, So the productivity gains flows to everybody. right, So yeah, it solves many problems. Like true. So that's hmm, what, like each of them in itself is hmm, like an hour long discussion. बहुत कुछ बोल सकते right. हैं इसके बारे में. चलिए, the next thing, Hmm, in other news across the world, Thailand, Australia, Europe, UK, all of these places have approved Bitcoin ETFs. And hmm, apart from US, the best performing one obviously is US till now because they started in January. hmm. Thailand का और ऑस्ट्रेलिया का 4th जून को हुआ है. And that will open doors to more inflows into this market. So yeah, that is that. And to supplement this, the number of banks, there are a lot of problematic banks in US, almost 59 if I'm not wrong. Hmm. Sorry, 63. 63 banks are on the verge of collapse in US. And this is not of rumors or anything. Hmm. FDIC ने ये बोला है साफ साफ on their official website that they are at a massive risk, and with total Mhm. asset at risk rising from 5.2 times Mhm. from 15.8 billion to 82.1 billion. Mhm. So इसको काउंटर करने के लिए you have something like Bitcoin.
again, like Bhavik just mentioned, its cap is fixed and you cannot Mhm. create more of it. तो ऐसा excess जो capital है which is not finding, and rehypothecation, all of these problems will be resolved if Bitcoin is made as a sound base layer of money, which is being done. We are seeing this in real time happening across the world. अभी तो Mm. people are very skeptical. They are treating it as an asset still. But धीरे धीरे when people realize you need this sound monetary system to be the Right. base of your economy, that's when the shift will happen. And ये shift होगा from quote unquote smaller countries जो अपना संभाल नहीं पाते their economy, and who are solely dependent on US. So the Mhm. shift will happen in these places, according to me, in my opinion. आपका क्या कहना है इस पे? Mhm. हाँ, like I agree, totally agree. बट जो एफडीआईसी का जो बैंकिंग का क्राइसिस का, आई थिंक ये कम, अभी भी लग रहा है कि ये कम नंबर है, अभी भी और भी बैंक फेलियर्स देखेंगे हम, और Yeah, मनी प्रिंटिंग चालू होगा बहुत जल्दी, yeah, और हो ही रहा है। आई थिंक वी आर अबाउट टू कवर द न्यूज़, राइट, अबाउट yeah. ईसीबी एंड कनाडा, राइट, ECB का, yeah, I think it's there. दे आर लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट्स मे बी, या। ये रहा. हम्म। तो ऐसे इस हफ्ते आई थिंक कनाडा हैज lowered हम्म। its interest rates. Europe हम्म। has lowered, and there was one हम्म। more country. I think Australia, if ओ, I'm not wrong. I'm not ओके। sure. तीसरा country कौन है? बट But ईसीबी इज there, बिग, राइट? yes, yes, ECB is big, so like Fed can do it anytime, like within 2-3 months at max. yeah. And so Hmm. so it all works like clockwork. जैसे हमने पहले बोला था कि ये halving cycles, this presidential US presidential elections, आपका Fed rates का hike and reduce Hmm. करना, all of it is synchronized with the Bitcoin halving cycle. ऐसा हो चुका है. Right. Like it was not planned, I think, but it Hmm. so happens that it is planned, and Hmm. we might see the results of it by November, December. कि क्या होता है. Hmm. Moving on, there are services like Fold app in US, and there is one service in India also. So where when you spend, आप जो भी spend करते हो in INR, you get sats in return. So this was started by this company called Fold app. The idea was started in US a couple of years ago. What they intend to do is a person when they're spending outside, जो भी उनके खर्चे एक्सपेंस होते हैं, ये जो फालतू के पॉइंट्स होते हैं, लाइक यू नो coupons and points which have validity, etc. Uske badle, you get sats in return. Sats, like we also in the earlier, I mean, the first part of the episode, 1 rupee in its current terms gets you 16 sats. So this only increases in value over time. The sats increase in value over time. Now you have services like Fold where you have all these services where आप अपने बिटकॉइन को फिजिकल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू एनी एटीएम. यू कैन पे योर बिल्स विद इट, एंड यू कैन बाई एनीथिंग एनीवेयर विथ योर डेबिट कार्ड. एंड उसको बदले में यू आर स्पेंडिंग यूएस डॉलर्स, फाइन, श्योर, बट वापस बदले में आपको बिटकॉइन मिल रहा है, विच इज एन एसेट. सो ऐसा कर लो आपके, लाइक ऐसा मान लो जैसे आपने खर्चा किया है ऑन बाइंग सम whatever things, खाना पीना, electricity bill, your daily के खर्चे, and you're getting a digital gold in return. So that's what this is. And companies like these will thrive in the near future because they are moving towards a Bitcoin standard, and they want everyone to adopt this and live on the Bitcoin standard. So if you there are multiple other services where you can actually transact in Bitcoin. लोग बोलते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया के बाहर देर आर मेनी कंट्रीज. पाको हैज़ कवर्ड इट बिकॉज इज ट्रैवल टू ऑल दोज कंट्रीज. आप वाउचर्स खरीद लो, यू कैन ईदर पे डायरेक्टली इन बिटकॉइन थ्रू लाइटनिंग एक्सेट्रा. तो इट इज़ कन्वीनियंट एंड ईजी, एंड द वर्ल्ड इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. सो या, in terms of developments, Bhavik, आप हो उधर? I'm not able to see Right. you. Okay, sorry. Hmm. Yeah, in terms of developments, the technical developments, ARK Labs has launched, and it's a layer 2 solution again, and they are trying to make it easier for the end user to transact on Bitcoin.
Now layer 2 Hmm. solutions की बात करते time you also have something called lightning, which we have been talking about for a long time. Hmm. Lightning network, again, for analogy sake, if Bitcoin is like a central bank, your lightning can be compared to UPI. तो आपकी Hmm. it's a very bad analogy. I mean बहुत सारे loopholes हैं Hmm. इसमें, but instant settlements, in not instant transactions के लिए you use lightning. And अगर आपको full and final settlement चाहिए, which is in the range of 10 minutes to 20 minutes, then you use the Bitcoin का on-chain platform. Hmm. So advancements are being done on the layer 2, which is ARK is one of them. Now, इनका main चीज ये था कि transaction fees and delays caused by congestion on Bitcoin's main chain are increasing demand for more scalable payment solutions. Lightning has made significant strides, but UX challenges, which is mainly the liquidity management, Hmm. are driving users towards custodial solutions. इसलिए इन्होंने आर्क इन्वेंट किया, आई मीन Hmm. हाँ, तो ये 2023 में प्रपोज किया हुआ था टू ऑफर स्पीड एंड स्केलेबिलिटी विदाउट बर्डन्स ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट. तो आपको मुझे लाइक द नॉर्मल लेमैन हु आर यूजिंग बिटकॉइन, दे डोंट नीड टू मैनेज लिक्विडिटी. लाइटनिंग में ये प्रॉब्लम थी वे यू हैड टू ओपन योर चैनल, क्लोज Hmm. योर चैनल, लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है. So it's a bit of a hassle for those who are non-technical and who don't come from that mindset. That is Hmm. what ARK is trying to solve. So Right. इन्होंने open ARK implementation start किया है, and people can try this out, and they have explained properly के how it works. Hmm. Lightning network and ARK network का difference दिखाया है. Uh, Uh, hmm, इसके इसके बारे में, अगर आर्क के बारे में, लाइक इफ एनीवन इज लिसनिंग और किसको डिटेल में जानना हो, तो गाई स्वान ने बिटकॉइन ऑडिबल पे लाइक लास्ट लास्ट ईयर जो पेपर है, बुराक बुराक hmm, हैज hmm, ऑथर्ड इन द पेपर. सो उसने hmm, मस्त अच्छे से पेपर रीडिंग कर रखा है और समझा रखा है. सो बहुत लाइक आई हैव लिसनड इट, नाउ आई hmm. फॉरगेट इट, बट मुझे तब समझ में आया था. सो बहुत अच्छे से समझा रखा है. सो लाइक एनीवन कैन गो लिसन दैट टेक्निकल aspect also. Right. Mm. So that's what I mean. These guys are saying specifically, all that Mm. said and done, we need to emphasize that ARC is not the replacement for Lightning. Lightning is an essential part of scaling puzzle. Mm. But it is suited for enterprise settlements. जैसे Right. Lightspark एक company है, Lightspark in association with Coinbase have integrated Lightning for users to withdraw their funds from Coinbase. So उन Mm. सब चीज़ों के लिए for major institutions, Lightning can be used. ARC can be used for normal retail people. Mm. Having said that, Lightning की capacity has hit a new all-time high. So what this means is जब हम बोल रहे थे कि the channels need to be created, liquidity needs to be maintained, that has increased to a Mm. great extent from last year. Right. एंड टू प्रूव, बहुत सारे ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स आए थे कि लाइटनिंग इज डेड, लाइटनिंग का कोई यूज नहीं करता. सो दिस पर्सन कॉल्ड आर्नल्ड डिड अ ग्लोबल एक्सपेरिमेंट, एंड उन्होंने कल ही स्टार्ट किया था कि ही वांटेड टू सेंड $1 ऑफ बिटकॉइन टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड. एंड जो भी अपने अपने कंट्री से इनवॉइस भेजता तो उनको तुरंत ऑन लाइटनिंग नेटवर्क भेज देते. And Mm. till now, in just over 12 hours, he sent $1 of Bitcoin to 61 countries, 30 Mm. countries in the world, 30% of all countries in the world, 18 different wallets, and all of them on Lightning. तो Mm. इन्होंने प्रॉपर एक Nice. एक्सेल भी बनाया है वेयर दे हिज ट्रैक्ड कि कौन से कंट्रीज में क्या क्या. हाँ, ये सारे कंट्रीज से they've transacted, sent and received. Nice. So this is a major breakthrough for anyone arguing with the fact that Lightning is not scalable, Mm. Lightning is not working. उनको आप ये Mm. एक्सेल दिखा दो, then they'll understand के what is the actual benefit of Lightning. You're right. So yeah. Lightning has a capacity, like right now, Lightning has a total capacity of 4,778 Bitcoin. Yes. So it is around 4,000 to 5,000 Bitcoin for the last 2 years. Right. But the value of the price of Bitcoin went up like 3 to 4 times in last 2 years. So capacity has went from 80 to 90 $100 million to now it is 330 million dollar. So Right. almost a one third of $1 billion of capacity. So it's a very
great capacity, and I think within 2-3 years we may pass $1 billion as Bitcoin Yeah, price goes up. Or true. Lightning Again, is amazing. Like Lightning keeps surprising me. yeah, It's the only layer 2 right. right now. For Hmm. now, yeah. Yeah. ये आर्क लिक्विड ये सब प्रॉस्पर अभी हो रहे हैं, लाइक दे आर Right. बहुत सारी चैटर इस पे चल रही है अभी फिलहाल. I was Hmm. not aware about liquid. I mean, I knew that it existed, but उतना Yeah, liquid can पढ़ा be नहीं था. Yeah. yeah. Hmm. Liquid, हाँ. like we can't say liquid is a layer 2. Liquid can be viewed as a side chain maybe. Yes, yes. Sorry, side chain है. Is But again, mm. it solves the scaling problem, and Yes, yes, that is what is definitely. required for all the people who are using it on a regular basis. Mm-hmm. So moving on, there is a lot of empty blocks which are originating, and mempool research ने proper explanation दिया है कि why do Bitcoin empty blocks exist. Mm. Now, empty blocks occur when miners find a block using an empty template. Many pools and empty templates to miners send empty templates to miners because they are Mhm. faster to distribute, helping miners start work slightly sooner. So, Mhm. what miners do, and please correct me if I'm wrong, Bhavik, तो Mhm. ब्लॉक टेम्पलेट बनते हैं एंड उसके अंदर ट्रांजैक्शंस अक्यूमुलेट होते हैं. Mm. Mm. सो जल्दी जल्दी में they have like 7 to 10 seconds to decide, I think, according to this Twitter article. Okay. तो they need to check कि उनको ब्लॉक सब्सिडी चाहिए या ट्रांजैक्शन का भी फीस चाहिए. एंड बाय ब्लॉक सब्सिडी आई मीन every 10 minutes which 3.125 बिटकॉइन आर प्रोड्यूस्ड, एंड उसके अंदर जो ब्लॉक में ट्रांजैक्शन जाते हैं उसकी भी सर्टेन फी होती Mm. है, जो माइनर फी होती है. इफ यू वांट टू Mm. क्लब दोस टू एंड आपको प्रॉपर चाहिए तो यू नीड टू वेट अ लिटिल. इफ यू डोंट, तब जाके पुश होता है एम्प्टी ब्लॉक. एंड Mm. ऑफ लेट 10.6% of all bitcoin blocks till date were empty, Mm. and majority were in the early days where transactions were very few. It is understandable because starting में 2010 2013 तक बहुत Right. frequency कम होती थी ट्रांजैक्शन, इसलिए empty Mhm. blocks बहुत सारे प्रोड्यूस होते थे. बट Mm. ओवर द टाइम, लाइक उस टाइम से लेके अब तक, रेंज 0.15 to 0.5 हो गया है ऑफ द एंटायर नेटवर्क. Mm. सो यहाँ पे लिखा है template approach. Each pool decides whether to send empty templates and follow up with full templates or only send full templates. So delayed Mm. switching to full templates means miners miss out on transaction fees. Only Mm. sending full templates causes slight extra delay. Mm. Of late, Ocean को and Spider Pool को बहुत सारे empty blocks मिले, and that's why they're facing a lot of criticism also. Because Mhm. Ocean, like we've covered in the previous episodes, are against the whole spam culture. Spam as in ordinals हो Prevention. गया, yeah, Mhm. ordinals, runes वगैरह, वो उन सब चीज़ों को spam मानते हैं, and they want it only for monetary purposes. That's why they remove all of this. I mean, No, according to like not exactly. Like they हाँ, still provide option to हाँ, miners, so you can ऑप्शन है. still choose. Right. यस, Mhm. यस, यस, सॉरी. तो उनके आप Mm. वेबसाइट पे जाओगे तो ऐसे 3 चीज़ें हैं. यू कैन चेंज द टेम्पलेट्स. देयर आर 3 टेम्पलेट्स आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उसमें से इफ यू कैन Mhm. चूज़ वन एंड अडॉप्ट दैट फॉर योर माइनिंग रिग ऑपरेशंस. Mhm. So currently, if miners switch to full templates within 7 seconds, the empty plus full strategy can be slightly more profitable. However, miners struggle Mm. with timely switching. इसलिए empty blocks कभी-कभी आजकल आने लगे हैं, and people have become very Mhm. concerned about it. Mhm. Recommendation for pools and miners with frequent empty blocks and long switching intervals should investigate delays and reduce switching time to maximize revenue. So Right. this is the only possible solution which Mm. can be done. Mhm. So उनको टाइम पे स्विच करना है और जल्दी स्विच Yeah, कर ले तो कई and I बार ऐसा think हो जाता है कि बैक टू hmm, बैक ब्लॉक्स आता है, yeah, तब वो उसको ब्लॉक क्रिएट ट्रांज़िशन जो टेम्पलेट क्रिएट करने का टाइम नहीं मिलता और वो सीधा नेक्स्ट ब्लॉक्स फाइंड करने चले जाता है। yeah. हुँ, It is also a very competitive market. अब देखोगे, like nobody wants to lose out on the opportunity of earning approximately हुँ, 3.2 3.3 Bitcoin every 10 minutes. तो मारामारी तो चलते रहती है, and that is why हुँ, the rush to 7 मिनट से पहले, 7 सेकंड से पहले करना है या 7 सेकंड के बाद, हुँ, हुँ, इसलिए उनका कभी-कभी मिस आउट हो जाता है. Some people हुँ, find
zero blocks. I mean, empty blocks. हम्म The next thing, David Bailey, who is the CEO of Bitcoin Magazine, उन्होंने recently बोला कि first presidential roundtable on domestic Bitcoin mining is officially happening. Titans of our industry meeting with the next president of the United States, history in the making. nice And Jason Lowry, who is an Air Force personnel, US के Air Force personnel है, उन्होंने एक book भी लिखी थी, I think Soft War के नाम से. right He is clearly told on Twitter that he has been consulted by the Trump cabinet, and he's been asked questions also कि क्या है, कैसा है, how can we incorporate it, blah blah blah, all of that. So there's a lot of chatter about this, and we can see with the elections and जब भी जैसा भी result होता है, and whoever wins, उस हिसाब से you can see the trajectory of Bitcoin being adopted in some way, or the regulations can be a little toned down from what it is right now. So yeah. Moving forward, there is Oklahoma में Bitcoin rights bill pass हो चुका है, and it is enacted as a law now कि everybody can self mine custody, and they can run your own node etc. और एक recently bill pass हुई है in Louisiana, another state, where again the same aspects, you can self custody, spend and accept Bitcoin mining in industrial areas, and ban the Louisiana government from accepting payment in CBDCs. So, state by state, Dennis Porter, who is CEO and co-founder of Satoshi Act Fund, and in this case Mark Wright, ये दोनों मिलके every state में, especially Dennis, every state में he is going and advocating for Bitcoin, speaking to the legislator, वहाँ के local legislators, and trying to get this implemented so that ऐसा नहीं हो कि even if एक यूनाइटेड स्टेट्स में ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स आपका ग्लोबल ये लगता है कि ठीक है बिटकॉइन माइनिंग बैन कर दिया और सीबीडीसी इज इम्प्लीमेंटेड, व्हिच इज वेरी अनलाइकली एट दिस पॉइंट, देन दीज इंडिविजुअल स्टेट्स कैन, उनके लॉ में है कि दे कैन सेल्फ कस्टडी, दे कैन माइन देयर ओन स्टफ. सो देयर विल बी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इसी बात को लेके कि हाउ इज दिस पॉसिबल. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैपनिंग देयर in these fronts, which I don't see happening in any other part of the world, at least not as openly yes as in US, which is kind of disappointing, to be honest. I mean, obviously पर India में अच्छी अभी बात है कि बोल रहे थे आप, बोलो बोलो. अच्छी बात है कि चलो यहाँ हो रहा है अभी धीरे धीरे, शायद इंडिया में या भी शायद हो इंडिया में एटलीस्ट. कब होगा नहीं पता, एंड कैसे होगा नहीं पता. देर आर again individual people who are very inclined and interested to push forward the policy and regulation aspect, but it will take its own course of time, because यहाँ अभी I don't think anyone thinks this as an important topic. They're like हाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा बना रहे हैं, let it be, और कुछ नहीं चाहिए, it's fine. उसको ऐसे ही दिखा जा रहा है. तो gradually. और वैसे भी टॉप टू बॉटम तुम इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकते, इट शुड बी बॉटम अप ना. लोगों को जब Correct. समझ में आना चाहिए, जब आज आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, 50 लोग और बोल रहे हैं, बस इतने ही लोग हैं Yeah. ज़्यादा. जब True. 150 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 लाख लोग बोलेंगे, है ना. Yeah. हम 1% भी नहीं बोल रहे, 0.1% लोग भी अगर आवाज उठाएंगे तो अपने आप लोग कोई ना कोई उसमें फाइट करेंगे. तो True. सो इट शुड बी स्टार्ट लाइक चेंज इंडिविजुअल Yeah. लेवल पे स्टार्ट होगा. When it comes to development, Bitcoin firm and Texas University partner for $5 million endowment fund. So Unchained करके एक company है, which is a custodial services provider, and University of Austin have partnered to launch long-term endowment fund holding Bitcoin. Endowment fund क्या होता है? Like every university over there has their own specific fund जो people from across the world can donate. High net worth individuals, it's NGOs, जो भी who want to support that particular institution, they अपना allocate करते हैं resources में. So they have allocated a certain portion, a very small portion of Bitcoin for the next few years. I think 5 years, if I'm not wrong. So 5 years तक they will hold Bitcoin, and obviously तब तक if they see benefit, which they will,
according to the past records at least, in terms of हम्म price appreciation वगैरह, they might increase their allocations. And ऐसा बस इसके साथ नहीं हुआ है, there has been one more institution as well in the past which have done this. ओके Harvard, Yale, Massachusetts Institute of Technology have dabbled in crypto investments as early as 2018. नाइस Filhal, it's UETX and Stanford University has increased portfolio exposure to 7% Bitcoin via BlackRock Spot. So all of these people are invested in Bitcoin in some ways, like whether directly holding it through custodial services or buying through BlackRock. And this trend will continue because it's not isolated anymore. सबको दिखाई दे रहा है कि what is the potential. It'll increase over time. Moving forward, अगर आपको कोई बोले कि बिटकॉइन का कोड तो कोई भी चेंज कर सकता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर ओवरऑल, इट्स कोई भी कॉपी कर लेगा, एंड कैसे लाइक आज मैं बोल दूं कि 21 मिलियन नहीं, आई नीड टू इंक्रीज टू 42 मिलियन, आई कैन डू इट, then you can present them with this chart where it is extremely difficult and very unlikely for shoddy proposals to go through and be accepted. And उसके बावजूद अगर God forbid यहाँ तक आता भी है, then node operators choose whether to use that particular version of the software or not. So it's a very elaborate process. पहले आइडिया आता है, फिर आइडिया डेवलपर कम्युनिटी पे जाता है, देन उसको फॉर्मलाइज तरीके से बीआईपी विच इज बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल उसको बनाया जाता है. इफ दैट डज नॉट मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, then again it will go back. If it meets the minimum requirements of BIP proposal, it is merged into BIP Git repository. उसके बाद everyone in the Bitcoin ecosystem, miner, node operators, developers, network participants, individual contributors, सब उसको scrutinize करते हैं, test करते हैं thoroughly, and उसके बाद में if there is value in that particular idea, it gets approved and the code is merged into the Bitcoin core का repository. And Bitcoin core के repository में only 6 maintainers are there, जो ये पूरा थरो रिव्यू होने के बाद, सबका कंसेंसस मिलने के बाद, देन दे मर्ज इट ऑन टू बिटकॉइन कोर. एंड राइट उसके बाद जब भी आपका नया बिटकॉइन कोर का वर्जन रिलीज होता है, दैट्स व्हेन इट इज पैच्ड ऑन टू इट एंड इट्स रिलीज्ड फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर एनी रिटेल रादर. उसके बाद जो इंडिविजुअल नोड ऑपरेटर्स हैं, लाइक आई मेंशन्ड, if they do not subscribe कि नहीं मुझे नहीं पसंद ये चीज, I would like to stay in the old version of it, so they can choose if you want to be in version 26 or version 27, whatever. So it is अभी भी हाँ अभी भी काफी कितने सारे नोड्स है, आई थिंक मैंने देखा था 30 से 40% नोड्स है वो ओल्ड बिटकॉइन कोर वर्जन पे भी चल रहा है, लाइक 3 years old. yeah सो या जरूर नहीं है, तब इट्स हार्ड टू मेक चेंज इनटू बिटकॉइन. एक्सट्रीमली. आप अगर इस चार्ट को ही देख लो, एंड दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड चार्ट बाय द वे, आप कभी बिटकॉइन कोर के रिपोजिटरी में जाकर के देखना, इट्स वेरी, आई मीन फॉर अ लेमैन who is not very technical, it is very complicated to function and move. तो ऐसे बहुत सारे forums होते हैं where ideas are discussed individually. Then when the idea is fully functioning and it has been tested on various fronts, then it is even brought to the proposal level. So one of the ideas is the whole great script restoration idea, which recently was brought up by Rusty Russell. तो उनका भी बहुत सालों से उनका एफर्ट चल रहा है टू bring back the op codes वगैरह सब. तो इतना इजी नहीं है मर्ज करना, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम. This is another development again across the world where accountants need to start learning about Bitcoin, and it is high time that people realized कि ठीक है, this is another segment that they need to focus on, especially accountants, because everything is related to finance and accounting, especially when Bitcoin is involved. India में the regulations are fine, but accountants still function on the traditional assets. आपके जो भी regular है, stocks के हो गए, long term capital, short term capital, business income, blah blah blah, all of that jazz, वो है. But if you talk about Bitcoin and cryptocurrencies, most of the people that I've spoken to are clueless, and बहुत कम लोग हैं within the cryptocurrency community who know about the actual
अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस। रखने को हम्म तो आप बैलेंस शीट में रख लोगे, बट उसको बेचने पे क्या होगा, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, उसको होल्ड करके उसका वैल्यू अप्रिशिएट करने में उसका उसका इम्प्लीकेशन क्या हम्म होगा, इज दैट टू बी शोन एज द एंटायर प्रॉफिट फॉर द कंपनी एज सच, या उसको अलग ट्रीटमेंट देनी है। All of these little intricacies are yet to be discussed, and a lot of people are not aware of this. So for anyone who's watching this in India, and if you're interested in accounting and Bitcoin, हम्म please, there is a massive runway and a massive हम्म scope for you to develop some sort of हम्म consultancy service around this, because बहुत लोग are still unaware and clueless. So yeah, if you are out there, डेफिनेटली we would like to talk to you, and we would like to invite you to our show to discuss more on that. हम्म हम्म I also talk with like many accountants in the last 1 year. हाँ, I tried to orange pill them. वो सुनना तो yeah, चाहते हैं, फर्स्ट मुलाकात सेकंड मुलाकात में सुनते, फिर उनको लगता है कि जब भारत में आने में 10 साल तो लग ही जाएंगे ना, तब हम सीख लेंगे। सो मैं yeah, बोल रहा हूँ 10 साल तो नहीं लगेंगे, लाइक आप 2 3 4 साल ही समझो। और अभी आपको डिक्लेयर तो करना ही पड़ता है, अगर इफ यू हैव अ correct, क्रिप्टो एक्सपोजर देन यू हैव टू डिक्लेयर इट। yes, सो फिर धीरे धीरे कोई टैक्स आएगा। सो अकाउंटेंट्स को तो सीखने की जरूरत है। और yeah, एडवांटेज भी बहुत है ना उनको, राइट है ना, एडवांटेज भी बहुत है, अगर सीख लेगा तो। करेक्ट। नहीं, तो बहुत नीश टॉपिक है ना ये, एंड हम्म अल्टीमेटली ऑब्वियसली उनका ही फायदा होगा अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग हम्म एक्सक्लूसिव हम्म सर्विस, और इफ यू आर टाइंग इट अप विथ आपके हम्म ट्रेडिशनल फाइनेंस के सर्विसेज। हम्म। सो या, नोस्टर में अगर हमें सेट्स मिलेंगे जैप में, तो फिर वो इनकम करी जाएगी, वो जो भी आएगा धीरे धीरे सारे लोग आएंगे। या आई एम श्योर आएगा। एंड दैट्स व्हाट ना, ये हम्म बहुत एम्बिग्यूअस एरियाज हैं हम्म कि अब तक ऐसा हम्म हुआ नहीं है, लाइक इन हम्म द वर्ल्ड, कि यू आर हम्म बीइंग सेंट मनी ऐसे फॉर योर कंटेंट व्हिच यू हैव हम्म क्रिएटेड, एंड वो भी इंस्टेंटली। हम्म सो और वो भी एनोनिमसली भी हो सकता है कई बार, लाइक। हाँ, तो अब उसको कैसे मेंटेन करेंगे, कौन हम्म दिया, कैसे दिया, इट्स अ हैसल। हम्म इसलिए वो कभी कभी लगता है कि दे पर्पसली डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज हम्म इट इज अ लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस। ऐसे नहीं है कि एक प्लेबुक रखा है, यूज दैट फॉर अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग राइट उस प्लेबुक से चेक कर लो। हम्म कमिंग टू आवर फेवरेट टॉपिक, नाइस Bitcoin mining is now at 55.8% sustainable energy use, and इसका यूज केस क्या है? There's a lot of this, मतलब every week we try to bring at least some हम्म news related to Bitcoin mining. And again, Bitcoin mining का, if you are looking at it from a country perspective, what is the use, बहुत लोग पूछते हैं, then हम्म you can show them this, कि clean power to under sorry underserved हम्म communities। जैसे एक केन्या के कंट्री साइड में 500 families are now receiving uninterrupted off grid power from the first time, made possible and affordable because of Bitcoin mining। हम्म हम्म तो दिस इज द एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी, जहाँ पे लोगों के पास अगर नहीं है पावर, this Bitcoin mining as a operation can provide electricity also, and at हम्म a very minimal cost. So हम्म that is why I personally keep yapping about Bitcoin mining, because I find a हम्म lot of potential and to do social good both at the same time। राइट बिकॉज इसमें जो ऑपरेटर है, जो बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेटर है, उसका तो फायदा हो ही रहा है, दैट इज फाइन, उसका प्योरली हाँ कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। बट एट द सेम टाइम जो आसपास के लोग हैं, हाउ आर दे बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, हम्म उनको फ्री पावर मिल रहा है, उसकी वजह से हम्म यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन दैट एरिया, दे विल कम, दे विल स्पेंड टाइम, दे विल स्पेंड रिसोर्सेज, मनी एक्सेट्रा इन दैट हम्म पर्टिकुलर पॉकेट्स ऑफ रीजन। एंड ऐसे बहुत हम्म सारे प्लेसेस हैं विद इन इंडिया ऑल्सो, देयर आर हम्म लॉट ऑफ प्लेसेस विच हैव hydro energy, wind energy, solar energy, हम्म which can be tapped into and capitalized, which are राइट। इंडिया इज अ very लैंड under. ऑफ रिवर्स। सो Correct, कितना कुछ हो सकता है। correct. हम्म आजकल तो काफी स्ट्रेसफुल चल रहा है कर्नाटका में, if you look at it, कि वो हम्म lakes and dams have reduced their water हाँ quantity वगैरह reduce हुई है, but that's okay, that's हम्म एक no, टेम्पररी है, बट नो हाँ, प्रॉब्लम, बट या अगेन दैट कम्स टू स्टेट प्लानिंग एंड आप कैसे हम्म यूटिलाइज कर रहे हो। अभी हम्म एक एक डेढ़ महीने से बारिश हो रही है, हाउ आर यू यूटिलाइजिंग दैट रेन, उसको स्टोर हम्म करके कैसे रख रहे हो, एंड हाउ विल यू यूज इट हम्म फॉर नेक्स्ट ईयर्स शॉर्टेज। वो पूरी राइट प्लानिंग है विच नीड्स टू बी डन थरोली, एंड हम्म उसके चलते you have services and options like this which can add हम्म value to
the indigenous tribes वहाँ के छोटे छोटे, I see it as a major win. अभी अभी जैसे इंडिया में हीट वेव्स चल रहे हैं, Yes. अभी थोड़ा शांति हुआ है, नॉर्थ इंडिया में हीट वेव्स चल रहे हैं। सो Yeah. हीट वेव्स चल रहे थे तो एवरीवन स्टार्टेड लाइक टर्निंग ऑन देयर एसीज, Yeah. सो ग्रिड पे ज़्यादा ही लोड हो गया, सो दे नीड टू कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो लोग Yeah. प्रोटेस्ट करने बाहर आ गए। और Yeah. कुछ 500 500 आई डोंट नो 10 100 समथिंग, कुछ लोग दे दे लॉस्ट देयर लाइव्स, कुछ Hmm. लोग गर्मी से मर गए। सो Yeah. लाइक बिटकॉइन इसको सोल्व करता है, Right. क्योंकि जो पावर जनरेटर्स है उनको इंसेंटिव्स नहीं, इनको अभी वो भी चाहते हैं कि हम हाई गीगावाट्स और हाई कैपेसिटी हम मैन्यू लाइक पावर प्लांट बनाए, बट उनको अभी Hmm. इंसेंटिव्स नहीं है, बिकॉज एवरेज डिमांड और पीक डिमांड वेरी करती रहती है। तो जब लाइक द 10% ऑफ द डेज, साल में कुछ 8-10% दिन ही सिर्फ ज्यादा पीक डिमांड रहती है, बाकी दिन वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करे, इसलिए वो ग्रिड Correct. बनाते नहीं है। बट if they do bitcoin mining, they can directly sell those that energy to bitcoin, so it's a True. win-win for all, and Right. they will also help in lowering the electricity costs. 100%. Hmm. तो कमिंग टू दिस, अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑस्लो फ्रीडम फोरम। Hmm. वहाँ पे बहुत सारे बिटकॉइनर्स एक्यूमुलेट हुए थे, लिन ऑल्डन, जैक Hmm. मॉलर्स, होटल, ये लोग बात कर रहे थे अबाउट हाउ बिटकॉइन impacts the society at large, how it's solving humanitarian crisis, Hmm. and बहुत सारे uh, initiatives are being stemmed from Bitcoin keeping as core. तो स्ट्राइक के सीईओ जैक मॉलर्स ये बोलते हैं कि बिटकॉइन इज द बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री, विच वी Hmm. कंप्लीटली अग्री. Hmm. You can watch this clip. I will not get into it. काफी लंबा है. And then you Hmm. can share your own feedback with us on what it is. Hmm. So yeah, that's it for today. Hmm. So ये So yeah, this is, yes. ना बोलिए, मैं वही बोल रहा था कि So आप hmm. like what we've covered today, there are multiple facets of it. आप, for anyone who's watching this episode, if you look at this episode into certain segments, then you will probably try to put it into a one big picture where Hmm. everything at the end of it boils down to why Bitcoin is and why do we keep talking about it and Hmm. what is it trying to solve. तो ये हम लोग, we try to do this in every episode where we try to show you the value of Bitcoin apart from Hmm. it being an asset, apart from the whole monetary, I mean, the gains and losses made in it. We are not talking about trading here at all. We are talking Hmm. about actual impact to the society at large, which can be derived from Bitcoin. And that's the objective of what we are doing. आप Hmm. कुछ बोल रहे थे भाविक, सॉरी. Hmm. मैं तो ये कह रहा था कि this is our ninth episode of the Bitcoin Weekly, and the Yes. first episode after the new Indian government. Oh yeah. Yes. Hmm. So So I don't see Modi any. somehow हाँ, Modi somehow policy. was able to structure the government, and so now it is the third time for NDA government. Yeah. Hmm. Now I don't see how Hmm. they'll be discussing policy about Bitcoin anytime soon. Although that is being very hopeful. I have Hmm. zero hopes about that अभी तक तो. Because Hey, again ना the वो meme value you posted, चीज. na? The Yeah. meme you posted or some, कौन when सा? the government of India or some जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे, सो वो पंचायत वाला मीटिंग करते रहिए, मीटिंग मीटिंग कल हुआ मीटिंग, एक नंबर। No, but रिएक्शन तो वही है ना ये पूरे बिटकॉइन का और क्रिप्टो सच में करेंसी कम्युनिटी इन जनरल, कि आप करते रहो मीटिंग, हम लोग अपना काम करते दैट मीम वाज ऑसम, मतलब मैं ऐसे जोर जोर से हंस रहा था ना जब देखने के बाद, और जिसको भी भेजा ना सब लोग हंस रहे थे भाई, रहे. सच में। करते रहिए मीटिंग, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग मीटिंग करके, क्या करेंगे यार। कैन वी प्ले दैट मीम?
you मीम have का it. यार, Did you upload it or not yet? हाँ अपलोड किया, आपको चलाना हम्म, पड़ेगा, मेरे में सम व्हाट हम्म। ये हम्म, मीटिंग खेलिए, मीटिंग मीटिंग करते रहिए, मीटिंग मीटिंग आल हुआ मीटिंग जी, मीटिंग मीटिंग खेलिए, मीटिंग मीटिंग करते रहिए, मीटिंग मीटिंग आल हुआ मीटिंग। yeah. Sorry. So, Khair, that was the gist of Hmm. today's session, and we have slightly deviated from our Saturday wala routine, but that's Hmm. okay. Health comes Hmm. first, and तबीयत ठीक नहीं थी, तो we had to push it. It's fine. Hmm. Hmm. I had to postpone it. No थोड़ा सा problem. हम्म अरे, like I said, health is wealth. Health के हम्म बाद Bitcoin comes. हम्म ठीक है, चलिए मिलते तो हैं अगले गाइस, वीक. यस, आप कुछ बोल रहे थे, थैंक सॉरी यू आई फॉर बीच बीच. वॉचिंग. हाँ, नो नो नो, ऐसे ही था. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. देखते रहिए अपने. एंड दिस शो वी लाइक स्पेसिफिकली ट्राई टू मेक फॉर बिटकॉइनर्स. नॉन बिटकॉइनर्स भी देख सकते हैं, बट बिटकॉइनर्स विल आल्सो एंजॉय. या, So like if you like it, then please give us a feedback. I think within few session we will also start doing live streams over यस, YouTube and also Nostr यप, soon, maybe within few months. या, So stick with us, subscribe Bitcoin Hub, and keep staking if you find Bitcoin amazing. And yeah, keep study Bitcoin. Na? यस, Study comes दैट इज first. एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. Hmm. इन्वेस्टमेंट तो चलता रहेगा, बट और क्या Hmm. क्या कर सकता है बिटकॉइन वो जानने के लिए प्लीज हेल्प योर सेल्फ, Hmm. एंड इफ वी Hmm. कैन हेल्प यू विथ इट, नथिंग लाइक इट. If you need any resources, Bhavik and I are always Hmm. a text away. We'll share those resources with Hmm. you. You can actually learn it yourself. Hmm. And obviously, there'll be doubts because we both are in it for years now. And there are Hmm. a lot of developments and things which even we are not aware of. And हमें भी नया लगता है. So I'm like it's only normal to be overwhelmed when you see Bitcoin, how it works under the hood for the first time. Hmm. डर जाओगे, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ Hmm. था. अच्छा. या, सिंपल Hmm. है बट बहुत कॉम्प्लेक्स है. आई डोंट नो इफ दैट मेक्स Hmm. सेंस. हाँ, बाहर से देखने में सिंपल इट्स है वेरी लेकिन कॉम्प्लेक्स है. या, इट्स लाइक अ ब्लैक होल है ना, कुछ ना कुछ या, आता ही जा रहा है नया नया. इट्स अ लार्ज, इट्स अ ह्यूज. राइट, इट कवर्स एवरीथिंग. या, एवरीथिंग एंड्स एट बिटकॉइन. ऐसा लग, जो भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ ना, कभी किसी से बात होती है तो सीधा दिखता है या बिटकॉइन इज अ सॉल्यूशन. लाइक या, फ्री मनी इज द सॉल्यूशन. या. हम्म. चलिए ओके. चलते हैं. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय. बाय बाय गाइस, थैंक यू. टेक केयर. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.